एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे हो। चलो, वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, आई वुड से, जहाँ पे कि ऑब्जेक्ट्स जो भी पुली से अटैच्ड है विल बी मूविंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन मोस्टली। ठीक है। सो आई हैव अटैच्ड 4 क्वेश्चन, लेट्स डू इट वन बाय वन एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने पुली में ऐसा देखा ना, अगर सिंपल पुली दिखता है तो एक मास अगर ऊपर जा रहा है देन वी हैव सीन वन विल गो डाउन, राइट? सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डन अ लॉट एंड वी यूज्ड टू इनकाउंटर सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन सो मच। बट आज हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट सेम सेंस में जा सकता है। Let's talk about this first question. So there are two masses A and B and that lie on a frictionless table. You can see A का मास क्या दिया हुआ है 1 kg, B का मास is 2 kg, ठीक है, and C का मास is 4 kg. Now what is happening here? What we have to calculate? Every rope given here is ideal, inextensible, frictionless, and also, sorry, massless, frictionless, all these three. Pulley is also massless and frictionless, so ideal case लेकर चलेंगे. And then we have to calculate acceleration of each mass. अब देखो यहाँ पे let's try to indicate pulleys, सॉरी स्ट्रिंग। सो आप स्ट्रिंग को चेक करो, देखो एक मुझे स्ट्रिंग ये दिख रहा है, दिस इज वन स्ट्रिंग, डन है, एंड देन दिस इज वन अनदर स्ट्रिंग, ऐसा done it. So tension in the same string will be same throughout because string is ideal, right? So tension को आप same कर दो, यहाँ पे suppose कर लो मैंने यहाँ पे tension T लिया, यहाँ पे tension T लिया, डन है इस केस में। सो व्हाट विल बी टेंशन इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग? सो हमने पढ़ा है अगर पुली मासलेस होता है, वट एवर फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट टुवर्ड्स राइट, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स विल एक्ट ऑन इट टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड सेम इज ट्रू फॉर वर्टिकल एंड डाउनवर्ड, राइट? सो यहाँ पे तो पुली हॉरिजेंटल टेबल पे है, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ वर्टिकल एंड डाउनवर्ड। लेट्स सी हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन। ये देखो 2T लगा, सो राइट डायरेक्शन में भी क्या लगना चाहिए? 2T, यानी कि टेंशन इन दिस स्ट्रिंग हैज टू बी 2T and tension in this string has to be 2T because this is complete one single string. Done it? So tension we have already distributed. Now let's talk about acceleration of A and B and C. So आप अगर ध्यान से यहाँ पे देखो ना, A and B are kept on a horizontal table. अगर कोई भी चीज को आप horizontal table पे रख रहे हो, horizontally it will move, right? Because it is not leaving the contact with the table, यानी कि normal reaction will be equal to mg. Let's not go there. Let's try to see कि because of being kept on the table, in which direction it is constrained to move. So it is constrained to move in the horizontal line, along horizontal line, right? अब आप B की बात करो, B पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है T। आप A की बात करो, A पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है T। दोनों पे फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, सो वी विल say that B will go in this sense, also A will go in this sense, है ना? सो दिस इज समवॉट वेरी पिकुलियर, वेरी मच स्ट्रेंज, क्योंकि हमने पुली में ये देखा एक अगर ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे, एक राइट जा रहा है दूसरा लेफ्ट, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। दिस केस इज totally different, right? So कैसे solve करें? So let's say both A and B are going towards right. Let's say acceleration of 1 kg body is your A1, इसको आप A1 ले लो, और B के एक्सेलरेशन को आप A2 ले लो, एंड लेट्स से दिस C इज कमिंग डाउन बाय व्हाट? A3। अब देखो A1, A2, A3 को अगर हमें रिलेट करना है, वी कैन डू इट फ्रॉम द कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट का शॉर्टकट भी मैंने बताया है, आई हैव मेड वन वीडियो ओवर दैट एक्चुअली। सो मैंने ये बताया था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी जीरो। सो फर्स्ट केस में मैंने लिया है टुवर्ड्स राइट, एक्सेलरेशन इज A1, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इज x1, एंड फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट इज x2, एंड फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट इज x3। सो अगर A के लिए आप करते हो, टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, सो दैट विल बी Tx। For second, tension displacement in the same direction, Tx1, that is Tx2, and for third, tension and displacement are oppositely directed, so dot product will be negative. आप यहाँ पे लिख दो इसको -2t x3 इक्वल टू 0। सो हमें क्या मिला? x1 plus x2 is equal to 2x3. If we differentiate it once with respect to time, we will be getting relationship of their velocities. And if we are differentiating again with respect to time, we will get the relation of acceleration. So we have got the relation of acceleration, right? A1 plus A2 equal to 2A3.
नाउ लेट्स राइट देयर फोर्स इक्वेशंस। सो अगर मैं फोर्स का इक्वेशन लिखूं, अगर ए के लिए लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी टी इक्वल टू मास ऑफ ए दैट इज 1 इंटू ए वन। इफ आई राइट द सेम थिंग फॉर बी, तो बी पे भी टेंशन टी लग रहा है, इट इज मूविंग टूवर्ड्स राइट ऑल्सो, इट्स मास इज 2 2a2, राइट। एंड इफ यू राइट फॉर द सी, ये नीचे की तरफ जा रहा था, हियर टेंशन वाज 2t, so you will be writing mass is 4, so 4g, and you will be writing 4g minus 2t equal to 4a3. We need to solve these three equations. I mean, we are having how many variables? एक दो तीन चार variables, four equations, क्योंकि हमारे पास एक और equation है, a1 plus a2 is equal to 2a3. Now let's put the values. I mean, if we have to calculate acceleration, I will be focusing on this equation. Let's call it equation third. This is 1, this is 2, and this is 4. सो इक्वेशन थर्ड को मैं पिक कर रही हूँ। आई विल बी राइटिंग 4g माइनस 2t। t का मैं वैल्यू क्या पुट कर सकती हूँ? चलो a1 पुट कर दिया, सो 2a1 इज इक्वल टू 4a3। a3 है ना? अब ट्राई टू राइट a3 इन टर्म्स ऑफ a1। कैसे कर सकते हैं? आप इक्वेशन 4 को पिक कर लो। अगर इक्वेशन 4 को आप पिक करते हो, a1 a1 प्लस a2, a2 को आप a1 के टर्म में क्या लिख सकते हो? देखो इक्वेशन 1 और 2 से हमारा रिलेशन क्या मिल रहा है? a1 इज इक्वल टू 2a2। सो a1 प्लस a2 करना है, दिस विल बिकम a1 by 2 and this is equal to how much? 2a3. So you can clearly see here, this is 3a1 by 2 equal to 2a3. a3 is equal to how much? 3a1 by 4. This is what we are getting, right? Now let's put that value here. A3 is equal to how much? 3a1 by 4. 4 will get cancelled. And here 4g is equal to how much you are going to get? 5a1. So a1 is equal to how much? 4g by 5. चलो हमें a1 मिल गया, अब हमें a2 भी मिल जाएगा, है ना? a2 क्या होता है? a2 is your a1 by 2. So a2 equal to a1 by 2 कर दो, 2g by 5. And if we know a2, we can calculate a3. a3 को क्या लिख सकते हैं? 3a1 by 4. So a1 हमारा 4g by 5 आया है, 3 है ना? a1 का वैल्यू लिखो 4g by 5 by 4. So this is this. ये कैंसिल होगा. Answer will be how much? 3g by 5. So these are the answers we have got, right? This is the value of what? a1, a2, and this is the value of a3, right? This is a3. So we have got the answer here. Thing is कि हमें notice ये करना था, A and B will move in the same direction. Nothing else. After that, I wrote constraint. After that, I wrote equation of forces, right? Now let's go to the second question. देखो यहाँ पे एक question दिया है. To paint the side of a building, there is a painter and he is normally hoists himself up by pulling on the rope A as shown in the figure. So देखो बिल्डिंग को पेंट कर रहा है और इसको ऊपर की तरफ जाना होगा, तो what he is doing, he is pulling on the rope और rope को पुल करने की वजह से he is able to go up. ठीक है? सो द पेंटर एंड प्लेटफॉर्म टुगेदर वेइज 200 न्यूटन। सो पेंटर और ये जो तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, दोनों का वेट दिया हुआ है, यानी कि दोनों का मास दिया हुआ है। लेट्स से मास ऑफ पर्सन इज स्मॉल m, मास ऑफ दिस थिंग इज कैपिटल M. So m plus m into g is given and that is your 200 न्यूटन। ठीक है? द रोप बी कैन विथस्टैंड 300 न्यूटन। ये वाला जो रोप है ना तुम्हारा, ये वाला, इसमें मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है? 300 न्यूटन। Now we have to calculate maximum acceleration of the painter, first case. So maximum acceleration, how you will calculate? For that you will be taking maximum tension in the string, है ना? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो इसको सिस्टम मान लो, क्योंकि हमें अलग से मास नहीं दिया है। सबसे पहले सिस्टम को समझो, व्हाट विल अकर हियर। जैसे ही दिस पर्सन विल पुल ऑन द रोप, ठीक है, उसको जैसे ही खींचेगा, दिस पर्सन विल गो अप एंड सिंस दिस पर्सन इज इन कॉन्टैक्ट विद द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म विल ऑल्सो गो अप। सो overall you will see that person is pulling on the rope and platform plus person together as a system is going up. ठीक है? So this way this system will work. The maximum acceleration हमें निकालना है. We can just identify here two things. सबसे पहले आप string को identify करो. This is one single string. Let's say person is pulling the rope with force A, then that will be the tension appearing in rope A, right? So if it is pulling the
rope with force A, tension getting appeared in the rope will be F. So यहाँ पे tension F हुआ. और देखो ये pulley massless frictionless है. So in this case, in this small string B, tension will be in terms of F to F. ठीक है. So maximum value of 2F can be how much? 300 Newton. So maximum value of F can be how much? 150 Newton. Now we have to calculate maximum acceleration of the painter. So for that, take the system man plus painter. And what is the net force acting on this system as it will go up? So देखो, this whole system is connected with two ends of the string, right? So एक string F टेंशन दिया, दूसरा स्ट्रिंग भी F टेंशन देगा, एंड डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज 200 न्यूटन. ठीक है. सो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस F? सो F मैक्स अगर लें, क्योंकि एक्सेलरेशन मैक्स के लिए वी नीड टू टेक F मैक्स, राइट? सो 2F max is equal to 300, F max will be equal to 150. ठीक है. So this is 150, this is 150, overall 300. So acceleration A max will be 300 minus 200 divided by mass of the system. So its weight is 200 न्यूटन. इट मीन्स इट्स मास इज 20 kg, राइट? क्योंकि वेट को आप जी से मल्टीप्लाई कर दोगे, 200 को जी से डिवाइड कर दोगे, यू विल बी गेटिंग m प्लस m, दैट इज 20, राइट? सो यहाँ पे आप 20 लिखो, 100 by 20, so your answer should be 5 meter per second square. Done it? We got the first answer. Now in B we have to calculate tension in rope A. For the case, first case क्या है? When painter is at rest. So जब painter rest में, then you have to talk about tension in the string. And second case, when painter moves up with an acceleration 2 meter per second square. In that case also, we need to calculate tension in the rope. So अगर मैं first case की बात करूँ, first case की, तो मुझे बताओ, जब ये system rest में होगा, let's say tension here is T, and if this whole system is in rest, then 2T must be equal to how much? Mass of this system, that is equal to 200. So 2T must be 200, यानी कि T must be 100. Question बहुत simple है. This is 100 Newton, right? When painter moves up with an acceleration 2 meter per second square. Let's talk about this person is moving up with acceleration 2 meter per second square. It means this whole system together. ऐसा नहीं है कि पर्सन ऊपर जाएगा, प्लेटफॉर्म नीचे आएगा, नहीं. दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. यहाँ पे देखो, ये पर्सन कॉन्टैक्ट बनाए हुए. So both will go up, right? And both are going up with acceleration of how much? 2 meter per second square. Take this 2 as a system. We can take, I mean, दो चीज को आप कब तक सिस्टम मान सकते हो? जब तक उनके बीच में relative velocity, acceleration, displacement नहीं है. ठीक है. To the long they are in contact, in short. So these two are in contact, we can take them as a system. So आप इसको system मान लो. There is no relative motion in the between these two bodies, platform and person. System मान लिया मैंने. So ये जो मेरा system है 20 kg का, it is going up with acceleration 2 meter per second square. Tension दो string की वजह से लगेगा, because both ends of a string are connected with platform and man separately. And we have taken man plus platform as a system. So T and downward force constant 200 Newton. Done it? So upward, in the upward sense it is accelerating, so you will write 2T minus 200 is equal to how much? 20 into 2. ठीक है. So 2T is equal to how much? 240. T equal to how much? 120 Newton. So this is going to be your answer. I have picked this question just because I want to make you understand the system. अब देखो, this question is a bit more interesting क्योंकि यहाँ पे हम थोड़े कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डिटेलिंग करेंगे. So let's talk about it. Let's first read the question. There is a block A of mass m by 2 and this is connected to one end of light rope. Done hai? Which passes over a pulley as shown in the figure. Done hai? You can see man of mass m climbs the other end of rope with relative acceleration of g by 6 with respect to rope. Mark this point. Acceleration of man with respect to rope is given as g by 6. And this acceleration is in the upward sense as given in the question. Find acceleration of block A and tension in the rope. ठीक है. अब मुझे ये बताओ, just try imagining yourself to be here in place of this person. आपको क्या लगता है? आप रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ रहे हो. ठीक है. इस रस्सी को पकड़ के आप ऊपर चढ़ रहे हो with certain acceleration with respect to the rope. आपको क्या लगता है ये मास किधर जाएगा?
ये ए मास, दिस इज क्वाइट नेचुरल थिंग, यू नो, दिस इज समथिंग दैट वी ऑब्जर्व इन आवर सराउंडिंग। आपको क्या लगता है ये कैसे जाएगा? इमेजिन करो तुमने पेड़ से एक रस्सी को हैंग किया, रस्सी दोनों साइड हैंग हुआ, एक साइड तुमने पत्थर लटका दिया रस्सी से जो कि ये है, और दूसरे साइड से तुमने चढ़ना स्टार्ट किया। व्हाट डू यू थिंक, दिस पत्थर विल गो अप और डाउन? सो यू मस्ट बी थिंकिंग लाइक कि मैम ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जाएगा। डन है? सो वी नीड टू क्रैक सच सिस्टम, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट लॉजिकली। ठीक है, सो ये ऊपर जाएगा, ए बॉडी भी ऊपर जाएगा। अब ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, लेट्स से एक्सेलरेशन ऑफ m by 2 मास इज a इन द अपवर्ड सेंस। सो इस साइड का जो रोप है, आई I मीन mean, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a अप है, तो रोप के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a डाउन होगा। होगा? I'm telling you, person is going up, not the other end of rope. We need to mark the difference. क्योंकि this person is going up, लेकिन हमें नॉर्मल पुली की बात पता है। हमें पता है कि अगर पुली का ये एंड ऊपर जाता है, and if it is hanged under the influence of gravity, another end will come down. नॉर्मल सी बात है, अगर तुमने इसको इधर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ गया तो ये नीचे की तरफ आएगा। डन? बट यहाँ पे जो पर्सन है ना, ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, एंड दैट इज मेकिंग श्योर कि ए एंड ऑफ द रोप इज गोइंग अप, सो बी एंड ऑफ रोप विल गो डाउन, while person on this side of rope is going up. So we need to crack the system, understand it. I hope you have got it. So now let's dive into calculation. अब तुम्हें क्या लगता है, acceleration of rope is how much? Is a this side in the downward direction, right? और ये पर्सन इस स्ट्रिंग के ऊपर g/6 एक्सेलरेशन से जा रहा है, सो यू कैन थिंक लाइक कि एक प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म वर्टिकल है, दिस प्लेटफॉर्म वर्टिकली इज गोइंग डाउन, एंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म देयर इज अ पर्सन हु इज गोइंग अप। डन है? दिस इज गिवन। अब देखो, दिस इज एक्सेलरेशन a of mass m by 2 with respect to the ground. Done है? So we need to write acceleration of this person with respect to the ground. Done है? Let's write it. So acceleration of rope with respect to ground is how much? That is a in the downward sense. जिधर तुम्हारा person है उधर की ही बात करेंगे ना, because this person on this side of rope is going up and this side of rope is going down by a. So if you solve this two for calculating acceleration of mass with respect to ground, what you will be getting, जैसे a m r को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a m minus a r, और a r g को आप क्या लिख सकते हो, a r minus a g. And if you are going to add these two, अगर आपने इन दोनों को add कर दिया, you will be getting a m minus a g, that is acceleration of man with respect to the ground, इक्वल टू, यहाँ पे g/6 है, सॉरी, एंड हियर इट इज a, बट डायरेक्शन को मार्क करो आप, एक अप है दूसरा डाउन है। सो इसको अगर g/6 प्लस लिख रहे हो तो इसको माइनस लिखना होगा मुझे। ठीक है, नाउ लेट्स ऐड दिस टू थिंग्स। सो a m g आई एम गेटिंग एज g/6 minus a. So with this acceleration, man is going up the rope with respect to ground. Done it? So we have got acceleration of m by 2 with respect to ground in terms of variable, that is a, and we have got acceleration of this person going up with respect to ground, that is g/6 minus a. Now write the FBD. अब आप FBD लिख दो, m by 2 पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, m by 2g, and here it is tension T. ठीक है, and it is going up with a, so you will be writing T minus m by 2g is equal to m by 2a. करेक्ट है? नाउ लेट्स राइट द सेम थिंग फॉर दिस पर्सन। दिस पर्सन पे नीचे की तरफ फोर्स क्या जाएगा, mg, सिंस his or her hand is connected with the string, string will pull it up in this sense, क्योंकि ये स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींच रहा है, स्ट्रिंग विल पुल इट अप, राइट? सो टेंशन टी विल रिमेन सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज मासलेस फ्रिक्शनलेस, पुली मासलेस फ्रिक्शनलेस, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल आइडियल, राइट? सो वी नीड टू राइट लाइक दिस। अब इसके लिए आप डायग्राम सॉरी इक्वेशन लिखो, इट इज गोइंग अप विथ व्हाट एक्सेलरेशन, g/6 minus a with respect to the ground. So we will be writing T minus mg is equal to m g/6 minus a. Then we have got two equations. Now let's go with one thing. Let's subtract these two equations. अगर मैंने subtract किया तो ये minus ये plus, again यहाँ पे ये वाला term minus हो जाएगा, ये वाला term plus आ जाएगा।
ब्रैकेट तोड़ते हो तो, राइट? सो t minus t 0 होगा and this will become mg by 2 and this will be how much? m by 2a plus ma minus mg by 6, right? So mg by 6 2 mg by 2 plus mg by 6 करोगे and this is equal to 3ma by 2. Now let's solve it. इसका denominator same कर दो. So you will be getting 4 mg by 6 is equal to 3 ma by 2. Cancel it out and you will be getting a as 8. This is 4 into 2. Yes, 8 by 18. Then 8 by 18 g, right? So this will give you how much? This will give you 4 by 9 g. So acceleration value is how much? It is 4 by 9 g. So I hope you have understood this question. Let's move into the last question. और ये question बहुत easy है. It will hardly take 1 minute. So what force must man exert on rope to keep platform in equilibrium? So what force it should exert? Let's say it is exerting F force. So in that case, it is pulling rope down with F force. Rope will pull it up with F force. That is tension getting a reason in this rope is going to be T. So tension हर जगह क्या हो जाएगा? T. क्योंकि this is a single rope, right? And this thing is ideal. So this is TT. So this side tension will be how much? It will be, sorry, opposite draw कर दिया मैंने. This will be 2t, right? So if you have to keep this system in equilibrium, system आप platform plus man मान लो because there is no relative motion between them. तो मैंने दोनों को माना system और मेरे सिस्टम का वेट क्या हो जाएगा 90 kg. उस पे डाउन फोर्स क्या लगेगा 900 न्यूटन. अप फोर्स क्या लगेगा देखो यहाँ पे पर्सन पे टेंशन टी ऊपर लग रहा है, प्लेटफॉर्म पे 2t ऊपर लग रहा है, टोटल टेंशन इज 3t. So 3t has to be equal to 900 Newton. So T equal to 300 Newton. So how much force the person should exert? He or she should exert 300 Newton of force. Okay. So I hope you have got such sort of questions. There are also some question in HC Verma, that monkey wala problem, that is same like these questions. Okay. So I hope you will practice more number of questions. And if you are having any doubt in here, you can always let me know in the comment section. Thank you.